मुंबई के कराडी टेल्स और भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल साहित्य पुस्तक इस डैट कुडकुड कुंभा का प्रकाशन समारोह हाल ही वाशी स्थित भारतीय विद्या भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चों और उन्हें अभिभावना से बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। इस समारोह में पुस्तक की लेखिका समिता अय्यर और विजय चक्रवर्ती के साथ ही चित्रकार अंबिका कलिंदकर विशेष रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपनी कलाकृति के अनुभव साझ की और बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में संगीत, खेल और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आयोजन किया गया, जिससे उपस्थित बच्चों में उत्साह और आनंद का माहौल बन गया। विशेष आकर्षण के रूप में निहार सर ने अपने गीत से सभी को खुश और ऊर्जावान बना दिया, जिससे बच्चों में और भी अधिक जोश आ गया। इस पुस्तक के प्रकाशन समारोह के बाल साहित्य के क्षेत्र में एक नई पहल को जन्म दिया है, जिसे बच्चों और अभिभावकों का उत्साहजनक समर्थन मिला। Cultural thing around it, because folk music in our state is very much related to the day-to-day activities of the people, right? So this is a song which is about that goat herd, and he's talking about his main herd, which is the goats. So I'm gonna sing it for class. This is a very typical rhythm of a Dhangar song, okay? 1 2 1 2 1 2 1 2. धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर, मातीवानी काळ कुणी दुधावानी पांढर, हे धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर, मातीवानी काळ कुणी दुधावानी पांढर, धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर. I want you to sing for the next part with me. This is what you need to do, okay? You just need to do this. Oh, can you practice? Oh, okay. So this is how the song progresses. साजिरी दिसत्यात ही गोजिरवानी हरण, पर माणूस लय उफराटा, अरे काळ त्याचं कर्ण, त्याची भूक लय मोठी, त्याची दानत लय खोटी, सुरी फिरुती त्याच्या नरड्यावरती, सुरी फिरुती त्याच्या नरड्यावरती, आणि आईबाच्या सुखापायी बळी जाती लेकर, हे आईबाच्या सुखापायी बळी जाती लेकर, धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर, धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर, मातीवानी काळ कुणी दुधावानी पांढर, धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर, धनगराची मेंढर गा धनगराची मेंढर. This is a song. This is a Dhangar song. Normally, when after a long day's work, when they come home, I don't know. And for their children's club, and I've heard all of you are from the BBB Children's Club. So thank you all of you for coming here and attending. Okay? Did you have fun? Yes. Yeah? So it was worth it? Yes? Yes. So thank you so much. Thank you to the little ones for coming and attending, and thank you to the big ones for coming and attending as well and having fun with us. So thanks so much. And I'd like to thank our authors Samita Iyer and Vijaya Chakravarti for bringing this wonderful story to us, and our illustrator Ambika Kalinkar for bringing it to life with so much color. And I'd like to thank Nihar, who has put this opportunity that we had to collaborate with Karadi Tales today. We are from the early childhood education and care team at IPSA. So our trainees are very shortly going to present this entire story of Kudkud Kumbha in the form of a puppet show for all the children of Navi Mumbai. Right? So definitely you can follow us on Facebook, Instagram, and look forward to coming over with your kids and enjoying the show and the story one more time. Thank you. Scientists Association Vice President.
हमारे यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, इसमें नर्सरी कम्युनिटी जो है नर्सरी स्कूल चलाती है और ECC कोर्स चलाती है। डिप्लोमा कोर्स है, SMDT से हमारा एप्लीकेशन है और बहुत सालों से ये डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके अंतर्गत ही हम कराडी टेल्स वालों के साथ कोलैबोरेशन करके ये हमारे जो एक मेंबर है विजया चक्रवर्ती, उनकी जो बुक लॉन्च का कार्यक्रम था वो यहाँ पर अरेंज किया था। विजया चक्रवर्ती बहुत टैलेंटेड राइटर भी है, लैंडस्केपर भी है, गार्डनर भी कह सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी को करती रहती है। और हमने ये सोचा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ECC उनको भी इससे काफ़ी लाभ मिला। तो नर्सिंग कमेटी की ओर से हमने कराडी टेल्स के साथ और जो है उसके बाद सब कुछ बताया। हम बच्चों के लिए किताबें बनाते हैं एंड आज हमने एक बुक की लॉन्च करी है विच इज़ कॉल्ड इज़ दैट कुड़कुड़ कुम्भा। और ये जो कहानी है इट इज़ सेट इन द सह्याद्री हिल्स एंड इट्स रिटन बाय 2 ऑथर्स, समिता अय्यर and Vijaya Chakravarti, both who are Bombay based, and illustrated by a wonderful Maharashtrian illustrator called Ambika Karandikar. And the story is about this bird called Kudkud Kumbha. So 2 little children go to visit their Aji and Azuba in the Sahyadri Hills in Dungarwadi, I think, and they hear the sound of Kudkud Kumbha and they don't know what it is. They get very scared about this sound, and then they ask many adults what is this bird, and each one gives a different description, and each time they make those drawings, and then finally when they see the Kudkud Kumbha, well, whether they are disappointed or surprised is for all of you to find out. But we were very happy to release the book today, launch it with at Bhavans, Bharatiya Vidya Bhavan and Vashi, with the partnership of Indian Women's Scientists Association, IWSA. And they have been absolutely wonderful in their support for this. And if you had come a little earlier, you would have seen the whole auditorium filled with adults and children, and the adults who became children. So thank you very much. We hope that the book spreads far and wide, and not just this particular book. We are very interested in creating literature from India, not tell the stories of Jack and the Beanstalk or Cinderella or Snow White. हमको बनानी है कहानियाँ, लिखनी है कहानियाँ जो हमारे देश की हैं, और हमारे देश में हर गली हर कोने पे कहानियाँ हैं, नॉट जस्ट, और हर गली हर कोने पे एक कहानी नहीं, काफ़ी कहानियाँ हैं, और एक कहानी अगर मुंबई से चेन्नई जाती है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है, it becomes gets another avatar. So India is filled with so many interesting stories, which is the reason we publish Kudkud Kumbha. पहले तो मैंने ये I have never heard this, and then it was such a Maharashtrian thing, and then Nihar made this song, and it was just, we saw the children respond. It was absolutely fabulous. And all our storybooks, all our publishing is based on stories from India, and we are super duper proud about it. Thank you and namaste. Please everybody read a lot and read to your children, read with your children, and I hope you enjoy all our books. To be here for the program hosted by Karadi Tales. I've written a book for them, co-authored, Kudkud Kumbha. So that is, something from my childhood. When I was very young, living in the mountains in the Sahyadris, I heard, I did not see, I heard a bird, coot, coot, coot. And then people around said, आता पाऊस येणार. कुडकुड कुंभाचा आवाज आला, आता पाऊस येणार. Then I moved to Mumbai as a little girl, and I did not know what the Kudkud Kumbha was. Much later, I was with Bombay Natural History Society, and there the resource person showed me a bird, and he said, "This is Kudkud Kumbha." So that is how Samita and I
got together and we built a story on this old memory of ours. And the story, of course, all of you all have heard. So we have different people, the Kumbhar Kaka, the Dangar Dada, and the Mali Mama, telling us about the bird, the different features of the bird. And finally, totally the young cousin shows us the bird Kudkud Kumbha. वीडियो जर्नलिस्ट बादशाह के साथ कविता राव की रिपोर्टिंग, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।